Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of data handling. This is 6th question of its exercise 3.1. So the question says that the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the first, highest and the lowest marks obtained by the students. So highest marks and लोएस्ट मार्क्स सो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स इज 95 एंड लोएस्ट मार्क्स इज 39. सेकंड, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड. सो रेंज हो जाएंगे हमारे पास highest marks minus lowest marks is equal to 95 minus 39 is equal to 656. Third, mean marks. So mean marks हो जाएगा sum of marks upon total number of test. So sum कर लेंगे इनका 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75 upon number of tests. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हो जाएगा हमारे पास 10. इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 730 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. सो मीन आ जाएगा 73. Mean marks is equal to 73. Thank you.